गवर्नमेंट का शहर है, चलने को नहीं है। तो आप देखो एक बार टूरिज्म डिपार्टमेंट ने तो लाइन बना रखा होगा ना, वो तो उधर उसके बाहर है, उसके बाहर है, टेबल पानी में गया। नाले के वो साइड में हमने करके दिया है। ऐसा करो आप लोग, जैसे आज तो संडे वेंसडे को मेरे पास आओगे, ठीक है, मेरे ऑफिस में आ जाओगे। क्या पॉलिसी है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, क्या नियम है, वो सब देख के मैं अभी एकदम से नहीं बता सकता कि इसको पीछे करो, उसको आगे करो करके। एक बार मैं समझ लूँ, उसके बाद आपकी जो मदद होगी आप ये कहते हैं तो टूरिज्म डिपार्टमेंट करेंगे। हमने कलिंगुट में तो किया ही है, यहाँ चलने को चांस ही नहीं करेंगे। ये आज जो इसका मर्डर हुआ उसकी वजह से हुआ, तो चलने का पुल के अंदर वो लेयर आना सभी इंफॉर्मेशन आई थी रिगार्डिंग अ पर्सन हु वाज ब्रॉट डेड एट PHC 2M। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर चालू की। वी हैव अरेस्टेड वन पर्सन इसके अंदर। इनिशियल इंफॉर्मेशन से जो जानकारी मिली है, कुछ उनका आपस में किसी बात को लेके आर्गूमेंट हो गया, एंड आफ्टर द आर्गूमेंट दे गॉट इनटू अ फिस्ट फाइट, और उस लड़ाई के बाद से वन पर्सन लेटर ऑन सकम टू इंजरीज। तो उसके ऊपर हम जो भी लीगल एक्शन है उसमें हम ले रहे हैं। द पर्सन इज़ इन आवर कस्टडी ओनली, और क्या सर्कमस्टांसेस रहे वो सारे उनको एग्जामिन किया जा रहा है। सर और भी कोई इसके अंदर है सर? अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है। अभी तक इसके अंदर वन पर्सन इज ओनली सीन फाउंड इन्वॉल्व। If there are more people found involved, we will take action against them. सर उसके ऊपर कोई वेपन्स का वगैरह अभी तक कोई वेपन का ऐसा कोई जानकारी भी नहीं है। हाँ सर। नेचर ऑफ इंजरीज देख के भी नहीं लगता है कि कोई वेपन यूज किया गया है। बाकी डॉक्टर्स का एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा रहा है। डॉक्टर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट सम वेपन वाज यूज्ड व्हेन वी विल इन्वोक सर। Today, present at the Mandre police station, the whole mob, whole villagers and the neighbors and the relatives have come together to inquire about the death of Amar Bandekar, a young boy of 35 years old, who has been brutally, daylight, it was a murder on the beach. Arambol beach, which is known for tourism all over India. It's a lovely beach, tourists flock into large numbers, but today the life of common man is in danger. We have noticed that innumerable violence activities are taking place. The beach is no more safe for people. A family doesn't want to go on this beach because of today there are a lot of activities taking place in such a way the non-Goans are overpowering the Goans. Now who is responsible? Who is responsible for this death? A death means a person is gone. Today, tomorrow, investigation, whatever is done. Today we have met PI. PI assured us that total investigation will be done and nobody will be left out. Today they have brought about 8 to 10 people. 10 people mob come together and beat one local boy. You just imagine what type of violence is taking place there. And why government is not taking steps by routine patrolling or whatever. The beach is totally occupied by the sheikhs. The sheikhs have reached close to the beach. How are the people going to walk? Now today this incident, because this boy used to go regularly for walk in the evenings. At the evening's time, when he saw some benches and all blocking the way, he just removed one chair, and the repercussion is his death. Is it good? Now, who is responsible for such things? There are incidents of being sarpanch, ex-sarpanch who have been beaten in the past. Such things are happening when we have a full-fledged Mandre police station coming up recently, and yet these type of things are happening. The law and order has just collapsed. And government looks like they're not bothered about it. The MLA, the ministry should be worried about such things happening. Immediate action should be taken. We don't see anything happening. So right now, it is a law and order collapse, totally collapse. And we, through all the neighbors, family members, friends, we have come together demanding justice for this boy. A family should be given justice. Okay, now interrogation is going on. We have got a word from PI. We respect him. We have received a word from him that total investigation will be done. Tomorrow, postmortem will be conducted. We will come to know the exact picture. So we expect justice done to this boy and his family. Thank you. साकान तुम्हाला एक फोन दिलो की आमचो एक मित्र
अमर बांदेकर तो आमच्या म्हणजे आता ना काही लोकांनी तेका बिचाचेर आमचे रेस्टॉरंटातले एक आमचे कूक आणि वेटर्सांनी तेका मारलो म्हणून अशें कळ्ळें. तेन्ना आमी बिचार येयल्ले, तेन्ना PI PSI बिचार आहले, ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहले तेंचे आणि काही भुरग्यांक ते धरलेले तेंच्यांनी. तेन्ना कळ्ळें की पयलीं कोणूच सांगना आलो कितें जालें तें, भियेले सांगपाक. जेन्ना आमच्या PSI आनी PIन जेन्ना तेंका धरलो, ट्रॅक केलो तेजो फोन आनी सी फॉर्म बी तेजे कितें आहलें ते मेळ्ळे तेज्या उपरांत तेका तेजो कॉन्टॅक्ट नंबर मेळ्ळो आनी इमिजिएटली विदीन 2 hours PIन तेका धरलो. तेका लागून पयलीं PIकू आनी ह्या पुलिसांच्या सगळ्या स्टाफाक हांव थँक्यू म्हणटा की बेगींतले बेगीन म्हणजे अशें 2 वरां भितून तेंच्यांनी कारवाय केली आनी तेंकां आतां धरून हाडल्या. पूण आतां म्हाजी एक अशी एक परतून एक आमच्या सरकारा कडेन विनंती आहा की जे बीच शेक आहा तेंच्यांनी टेबल खुर्चे सारके उदकान घातलेले आहा आनी चलोंक जागो ना वचपाक बिचार. सांजचे जर वयतले वॉकिंगेक जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. आयचो जो इन्सिडंट घडला हो फक्त शेकाक लागून घडला की म्हाका दिसता ती शेकां दिल्या गव्हर्मेंटान तेंची लायसनां रिवोक करची आनी हेंकां लायसन हेंकां शेक घालूंक दिवचे न्हू. जे खुर्चे आनी टेबल दर्यार घातल्या तेंकां सगळ्यांक न्हू एकाच शेकाची बाकीच्यांक सुद्दां हेंची कारवाय करपाची गरज आहा. आनी हेंच्या फॅमिलीक तेंकां कितें ते न्याय मेळोवन दिवचो आनी हेंचेर कारवाय करची इतकेंच मागता.